Today's class will discuss about the docker ignore. So docker ignore टा कौन, right? तो आमे जहाँ भी वर्तमान पर्यंत docker ऊपर पढ़ीचे, right? तो जमती कि आमे एबे डिस्कशन करतले कौन context area, right? Docker file context area, right? तो docker ignore is related to that. केमती ना गोटे context area रे कौन थाए? सो आमे जमती कि जानते जे कोन से गोटे प्रोजेक्ट बा गोटे डॉकर फाइल आमे बिल्ड करिवा जो गोटे प्रोजेक्ट रे आमे काम करूचे तो गोटे स्पेसिफिक डायरेक्टरी किंबा फोल्डर रे हम काम करिवा, राइट? हमरो जहाँ भी रिक्वायरमेंट अछि से फोल्डर भीतर रखिबा और सेठी हमें डॉकर फाइल क्रिएट करिवा, राइट? से डायरेक्टरी भीतर तो जेते बेले हमें सेही डायरेक्टरी भीतर हमें डॉकर फाइल गोटे बिल्ड करूचे तो एट दैट टाइम whatever content available, right? Whatever the files, anything, right, available in that context area, in that folder where our Docker file is getting built, that will be packaged and added inside the image file. So image file रे सब जाक जहाँ भी अच्छी context area रे सब add हो जिवो, right? तो से इमेज टाक मु चाहिबी से बिल्ड सरला परे ताकू जे कोनसे एनवायरनमेंट को नेकी जिबी जो एनवायरनमेंट रे मु कंटेनर क्रिएट करिवि तो से इमेज फाइल रे जहाँ भी इंस्ट्रक्शंस थिबो जहाँ भी फाइल सब आड हिथिबो सेठी हमें से सर्वर रे हमको मिल जिवो तो जे भी ताकू नेला से इंफॉर्मेशन पाई जिवो किछि टाइम रे हमको कोन दरकार पड़िबो ना किछि इंपोर्टेंट फाइल, राइट? बा किछि सिस्टम इंफॉर्मेशंस बा किछि क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस, राइट? जोटा कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस जोटा कि तमे चाहुनो इमेज रे रहू बोली, राइट? पैकेज की रहू बोली बट ड्यूरिंग बिल्ड टाइम तमे चाहुनो हेटा रहू बोली तो से टाइम रे कोन करिवो ना तमे डॉट डॉकर इग्नोर गोटे फाइल क्रिएट करिवो और तारी भीतर ए टाइप रो जो अछि हमरो रेगुलर एक्सप्रेशंस, राइट? वाइल्ड कार्ड यूज करिकरी तो तमे जहाँ चाहुचे इग्नोर करिया पाई तो जेतेबेले गोटे इमेज बिल्ड हो तो एठी कोन कहै छै बिफोर द डॉकर CLI सेंड्स द कंटेक्स्ट टू द डॉकर डेमन it looks for a file named docker ignore in the root directory of the context. So root directory of the context, what is that? Context is the directory where our docker file is available, right? So if this file exists, CLI modifies the context to exclude files and directory that matches the pattern. So जो patterns हमें रखीचे dot ignore, so এটা ଗୋଟେ normal just आउ कोठी हमें ए टाइप रो डॉट इग्नोर हिसाब रे देखिचे कहलो के मन पकेबो गीट रे जेमति एटी हम देखले डॉट डॉकर इग्नोर ए टाइप रो फाइल आउ कोठी देखि देले हमें गीट इग्नोर git, राइट? सो डॉट git ignore जेमति कि हमें जेकोनसी फाइल हमें चाहुने रिमोट को पुश करिया पई सेटी हमें डॉट git ignore रे से फाइल को रखी दबा, राइट? तो सिमिलरली हमें डॉट डॉकर इग्नोर जो भी कंटेक्स्ट एरिया अछि ताको हमें चाहुने इमेज सहित ऐड करिवा पई, ओके? अननेसेसरी योर इमेज साइज विल इंक्रीज, राइट? बुझी पालो डॉट डॉकर इग्नोर तो ये टाइप ऑफ स्मॉल क्वेश्चंस दे विल आस्क लाइक द क्वेश्चंस आई आस्क्ड, राइट? व्हाट इज द कंटेक्स्ट एरिया? बेसिक क्वेश्चंस, राइट? बेसिक क्वेश्चन तमे सही हिसाब रे बुझेबार अछि ना तबे तमे तेले इंटरव्यू अटेंड करूचो तो इंटरव्यू तुम क्वेश्चंस पचाउछ, राइट? You should be able to answer this kind of small questions, right? Very basic questions. Context area, docker file कोन तो तुमको docker file कोन कोन इंटरव्यू फर्स्ट ये रे पचारिबेनी, राइट? जल्दी से फील कले जे तमे डॉकर रो क्वेश्चंस कहबा को असमर्थ होउचो, राइट? Not able to tell all the answers of the questions, right? That time they'll feel like might the person doesn't know anything about Docker, so they will ask what is Docker file. The basic questions pachare Docker file kon tome really kamo korche janicho then you can explain well, right? That's a very basic questions. I should see ame jitte bhi experience hona kahin
आम सब आम रूट को धरिक रही राइट बेसिक जानी दरकार तुम बेसिक जन जानी तुम गच चढ़ी जाऊ फर्स्ट ओल्लैवा शिखी न राइट ऑटोमेटिकली जेकोसी बिल्डिंग को तुम पलौच बट तुम जान नू स्टार्ट कर इट्स अ प्रॉब्लम राइट सो you have to focus on the basics first